अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन सकते हैं मुझे? जी सर, वालेकुम सलाम। यस सर, आ रही है आपकी आवाज़। थैंक यू। मैं ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in today's session. I think all of you are fine enough. सब ठीक हैं, सब खैरियत है आपके दाएं बाएं घर वालों में, अजीज़ो क़रीब में, आप खुद। आप में से कोई एक अपने आप को अनम्यूट कर ले ताकि मुझे अंदाज़ा होता रहे कि आप लोग मेरी बात सुन सकते हैं। जी हाशिम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर आवाज़ कम आ रही है। सर आवाज़ कम आ रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कम आ रही है। अब बताइए। जी जी, अब बेहतर है। अब वैसे बेहतर। अभी बेहतर हो गई है? जी सर। ठीक। बस ये ख्याल रखना, जब आप लोग फील करें कि कोई साउंड इशू है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। ठीक सर। कोर्स ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जो हमें आज डिस्कस करना है वो है बायोग्राफिकल रिसर्च और ऑटोबायोग्राफिकल रिसर्च। जिसे ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं और बायोग्राफी भी कहते हैं। तो टू नो अबाउट द बायोग्राफिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी, अगर हम इससे पहले थोड़ी बात कर लें कि व्हाट डू वी नो अबाउट द बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। आप सबके माइक अलाउड हैं, यू मे अनम्यूट इट। I would like to hear from you that what do you know about autobiography or biography। अभी हम लफ्ज़ रिसर्च की बात नहीं कर रहे। I am just talking about autobiography and biography। तो वन बाई वन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये कोशिश करें कि सब लोग अपने अनम्यूट नहीं करें। Sir, autobiography is when writer include his personal experiences। खालिद, मैं आपको खुद अलाउ करता हूँ, सब ने अनम्यूट कर लिए।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी खालिद, अभी बात करें आप। सर ऑटोबायोग्राफी वो होती है जिसमें राइटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो इंक्लूड करता है अपनी राइटिंग में, मतलब अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में वो बात करता है। ठीक है जी, और कोई हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी मुजाहिद। जी सर, sir, autobiographical writing is when the author or writer writes something about his life, his achievements, and include his about his life from A to Z. This is called autobiographical element, autobiographical writing. When someone other writes about some other one, it is called biographical element, biographical writing. मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब कोई खुद अपने बारे में लिखेगा, राइटर जी अपने सर, बारे में खुद लिख रहा हो तो वो ऑटोबायोग्राफी है, अगर कोई उसके बारे में दूसरा लिख रहा है तो वो बायोग्राफी है। एम आई राइट? जी सर, यस सर, एग्जैक्टली। ओके जी। हाशिम, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? हेलो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बारे में अपने एक्सपीरियंस को मिला के जो है अपने बारे में अपनी लाइफ लाइफ के बारे में जो है ना हम्म। कोई कुछ लिखता है तो वो राइटिंग जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल कहलाता और बायोग्राफी क्या होती है? है। बायोग्राफी मीन सर किसी की लाइफ के ऊपर जो है कुछ लिखे, चाहे कोई दूसरा लिखे तो शायद वो बायोग्राफिकल है। अच्छा, क्या उसकी लाइफ के कुछ हिस्से के बारे में या टोटली कवर करते हैं उसको? सर पूरी लाइफ के बारे में ऑब्वियसली। अच्छा, अगर कंप्लीटली किसी की लाइफ को डिस्कस ना किया गया हो उस राइटिंग में तो उसको तो फिर हम बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी नहीं कहते। सर ऑटोबायोग्राफी तो किसी की अपनी एक्सपीरियंस अपने बारे में उसको मतलब डिस्कवर करना राइटिंग में। हम्म। ठीक है, थैंक यू जी। नेक मोहम्मद। सर ऑटोबायोग्राफी के हवाले से मैं कहना चाहूंगा सर, व्हेन a writer write about his life experiences, about his failures, about his success, about his troubles, so and so forth, sir. These all are called autobiography. Where biography is that someone when we read someone's biography, for example, when we read Toni Morrison biography, sir, she writes in her autobiography that when we read her biography, that she writes about her life experiences, about her failures, about her success, and about her familiarity. So she writes everything in her autobiography, and when we read her autobiography, it is called biography. ओके जी। कोई और इस संबंध में कुछ कहना चाहें, किसी और ने पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना हो तो वेलकम। अबाउट बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। जी आकिब, बोले बोले विजाज। सर बायोग्राफी से मेरा मुराद ये है कि किसी फेमस पर्सनैलिटी को मतलब कि डिस्कस करना, उसको स्टडी करना, उसकी लाइफ को। क्या हम ये ऐड कर सकते हैं? नहीं, फेमस ठीक है। मतलब पॉलिटिशियंस को डिस्कस करना है उनकी ओवरऑल लाइफ को, बायोग्राफी। नहीं, इसमें कोई और ऑटो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आप बड़ी कोई फेमस फिगर को, बहरहाल अप टू मच एक्सटेंट वो सेलिब्रिटी तो होनी चाहिए। वो लोग हैं वेल नोन जिनके बारे में लिखा जा रहा हो, तो ठीक है, ये काफी हद तक बात आपकी ठीक है। ठीक सर। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इसकी आगाही लेते हैं कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, फिर हम
बायोग्राफिकल रिसर्च मेथडोलॉजीज पे बात करेंगे, जो हमारा कोर टॉपिक है टुडे. लेट मी शेयर विद यू व्हाट is autobiography. Autobiography is from the Greek words that is autos, meaning self, and bios, mean life. तो इन दोनों को मिला के जब लिखते हैं तो ये बन जाता है लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में. जस्ट अ मिनट जी. तो काबू नहीं आ रहा. is a written account of the life of a person written by that person. Autobiography. आप लोग इसके बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे, that is very true. आपके बजाज आपकी बात हो गई है या आपने बात करनी है? You have raised your hand. Hello. जी. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, आप स्क्रीन से पढ़ा रहे हैं वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं? अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है. मैं जी, जी. जस्ट अ मिनट. अब बताइए. जी सर, आप विजिबल है. हाँ, ये ज़रूर आप हाईलाइट करें, अदरवाइज अर्ज होगा क्लास का. जी सर. An autobiography is an extensive true narrative of an individual's life from infancy to date, from his point of view and in his her own personal style. Narrative, narrative is a writing style that is component of qualitative research methodologies. We are aware about different of the traditions in research methodologies. One of the tradition is narrative. तो अदरवाइज हम कहते हैं फलां का नैरेटिव क्या है, वो थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं, बट नरेशन से है ये आपका राइटिंग स्टाइल. तो यार, एक तो ये जो वेटिंग रूम में लोग हैं ना, ये बहुत अनड्यू तंग कर रहे हैं. टाइम पे क्यों नहीं एंटर होते? तो अपनी ही लाइफ में फ्रॉम इन्फेंसी, जब होश पकड़ा, जब संभाला, जब कुछ अपना याद रख सकते हैं, तो उस टाइम से लेके ऑनवर्ड जो आपका अपने बारे में टोटली व्यू पॉइंट है, उसको राइटअप में जब आप लेके आते हैं तो ये ऑटोबायोग्राफी कहलाता है. इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है. ये डिफरेंट एजेस में इसको लिखा जाता रहा है. more prominent and familiar ages are apologia, oration and confession. तो ये इसके 3 classical periods हैं. Let's see through the lens of classical period about. जी फरमाइए साजिद, बोलिए. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम. Sir, actually, I want to add something in autobiography and biography. Actually, autobiography is not related to any famous personality or any particular writer. This will be any kind of person. Like I am, I can also write about myself. And if someone write about myself, then this will be biography for me. So
This will be of any kind of person, not famous or particular person. ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। जी आमना, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही अभी भी हमें। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्यों साजिद, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर हो रही है। जो ये क्लासिकल पीरियड है ना, यस, इसकी हो रही है। हाँ यही अभी होनी चाहिए। जी जी सर, ये हो रही है। जी आमना, जी सर हो गई। जी हो गई सर। ठीक है जी, थैंक यू। सो in classical period there are three tenures like apology, oration and confession. Let's discuss the first one. Apologia, supporting to be self-justification rather than self-documentation. It means that Hashim, क्या issue है? Sir, autobiography and biography is still unclear to me. ऑटोबायोग्राफी तो किसी तक समझ आया सर, ये बायोग्राफी का जरा बताएगा। ये 4 लोगों ने बात की है इस पे, अभी लेटेस्ट साजिद ने बात की थी। तो मेरा ख्याल है साजिद ने ये कहा है कि एक बंदा दूसरे के बारे में जब लिखता है तो वो उसकी बायोग्राफी लिख रहा है, अगर अपने बारे में खुद कोई लिख रहा है तो वो ऑटो लिख रहा है। यार ऑटो मीन हर सेल्फ फॉर हिम। और जी जी जी, इसमें किसी वो नहीं है कि जी बड़ी कोई फेमस पर्सन हो, और इसका वो भी नहीं है कि बहुत पॉजिटिव हो तो ही लिखा जाता है। नोटोरियस लोगों को भी बायोग्राफी होती है और लोग लिखते हैं। महमूदुल ओके हसन, सर, थैंक यू सर। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? महमूदुल हसन। आप एक अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोल रहे हैं। सर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑटोबायोग्राफी जो है वो किसी फेमस राइटर या किसी भी सेलिब्रिटी के हवाले से हम कह सकते हैं, और बायोग्राफी जो है वो एनी लेमैन, किसी भी पर्सन के हवाले से। ठीक है, ये अभी हम इन चीज़ों को कर रहे हैं डिस्कस। आप लोगों की कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट स्टैंड लिया है। तो अभी क्योंकि हम इस पे बात कर रहे हैं तो आपको खुद भी क्लैरिटी हो जाएगी, और इनको लेटर स्टेज पे फिर हम डिस्कस भी करेंगे कि कहाँ किस हद तक कोई कंफ्यूजन अगर है तो। ठीक हो गया, मैं आप सबको अलाउ कर देता हूँ, आप अनम्यूट कर सकेंगे ज़रूरत के मुताबिक अपना माइक, लेकिन प्लीज़ सब लोग इकट्ठे करते हो तो फिर डिस्टॉर्शन होती है। इस इरा में सेल्फ जस्टिफिकेशन रादर देन द सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन। तो सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन मीन खुद रिपोर्ट करना, डॉक्यूमेंट करना और उसको सेव करना और शेयरिंग किसी आने वाले वक्त लोगों के साथ। तो बट इन ऑरेशन, इस टाइम में जो ऑरेटर्स का टाइम था, not of a public kind but literary kind that could not be allowed in privacy. तो पिछले वाले में हमने देखा कि वो सेल्फ राइटिंग, सेल्फ डॉक्यूमेंट आप अपने लिए रखते थे। इसको आगे जाके हम देखेंगे कि आज के दिन में टाइम में इसको किसी और नाम से भी याद करते हैं, लेकिन ओरेशन में है कि इसको पब्लिसाइज करते हैं लिख के लोगों को। कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। A memoir, on the other hand, covers one specific aspect of the writer's life, while an autobiography focuses on the chronology of the writer's entire life. Specific aspects of the writer's life. एक तो अभी किसी ने कहा कि जब हमने यहाँ देखा कि जब वो कोई होश संभालता है इन्फेंसी से ऑनवर्ड, जब उसको समझ हो रही होती है कि वो क्या देख रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है और क्या कह रहा है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स
में इन बातों को लेके आते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये वो स्टेज है जब आप कह सकते हैं कि वो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स जो हैं उसके कुछ मशहूर वाक़यात जो वाकई ताल्लुक़ रखते हैं कि लोगों के साथ शेयर किए जाएं, उनको लिखना और फिर क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लिखना। क्रोनोलॉजिकल आर्डर बेसिकली ये होता है कि जो फर्स्ट वाक़या हुआ था वो पहले, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में, एक चेन में चलते हैं, चेन टूटने नहीं देते। इस तरह हम कहते हैं ना कि रेफरेंस की जो के अंदर गैप नहीं होना चाहिए, तो सिमिलरली ये इस तरह चलता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर, फर्स्ट वन, देन सेकंड, देन थर्ड, सो ऑन। दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। थर्ड इरा जो है दैट इज द कन्फेशन, initiating the chain of confessional and sometimes racy and highly self-critical autobiographies of the romantic era and beyond. तो एक सेल्फ क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफी भी रही लिटरेचर के हवाले से। इन द स्पिरिट ऑफ Augustine's confession in 20th century, Historia Clemicum better abroad, outstanding as an autobiographic document of its period। ये फर्स्ट जो 12th सेंचुरी के अंदर फर्स्ट टाइम ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, जिसके उस डॉक्यूमेंट का नाम था। रिनाइसेंस पीरियड है फिर इसका, चूंकि भाई हम इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं ना, तो वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द रिनाइसेंस इज दैट ऑफ द sculptor and goldsmith, written between 1556 to 1558 and entitled by him simply Vita, that is an Italian word, it means life। about life renaissance period में उन्होंने 1500 से लेकर 1571 तक इसमें लिखा। No matter what sort he is, everyone who has to his credit and what are on really seeing great achievements, if he cares for truth and goodness, ought to write the story of his own life in his own hand. But no one should venture on such a splendid undertaking before he is over 40. So अचीवमेंट्स की बात है, गुडनेस की बात है, और अपनी लाइफ स्टोरी लिखने की बात है। तो notable English autobiographies of 17th century include those of Lord Herbert and जो पब्लिश हुई 1764 में, और जॉन यान की जो 1666 में पब्लिश हुई। Memoirs, a memoir has a narrower, more intimate focus on his or her own memories, feelings, and emotions. Memories have often been written by the politicians or the military leaders as a way to record and publish an account of their public exploits. एक्चुअली ये वो रिकॉर्ड जो खुद से वो अपने वाकयात को लिखते हैं, पॉलिटिशियंस और मिलिट्री लीडर्स, जो अहम वाकयात जिन्होंने हिस्ट्री में ट्विस्ट दिया, हिस्ट्री में एक अहम किरदार अदा किया, और किस तरह से उन्होंने पब्लिक एक्सप्लॉयटेशन की, ये अल्टीमेटली उनके गुड फेथ में या बेनिफिट ऑफ द पीपल एट लार्ज चीज़ें होती हैं जिसको वो रिकॉर्ड में रखते हैं। A journal record of events of matters of personal interest kept by anyone for his own use, in which entries are made day by day as the events occur, now usually employing something more elaborate than a diary. तो एक्चुअली जर्नल में एक टाइम फ्रेम होता है कि डे बाई डे कब क्या करना है, कैसे। तो ये हम आम अपनी रूटीन के जो वाक़यात रिकॉर्ड करते हैं, ये बेसिकली डायरी की एक शक्ल भी है। तो हम यूजुअल रूटीन के जो वाक़यात नोट करते हैं और लिखते हैं, इन्हें डायरी भी लेटेस्ट हम इस लेटेस्ट स्टेज पे डायरी कहते हैं। डायरी इज अ डेली जर्नल ऑफ one's thoughts, feelings, moods, actions, activities and so on. It's not usually intended for an audience, it's personal. तो अभी एक्चुअली मैं आपकी तरफ तवज्जो इसी तरफ दिलाना चाह रहा था
कि जब हम कहते हैं कि डायरी जो है वो किसी की पर्सनल डेली जर्नल है अबाउट थॉट्स, फीलिंग, मूड्स, एक्शंस एंड एक्टिविटीज, और ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसको खुद अपने उसमें रखना होता है, तो ये मैच करेगी उसी वास्ते जो हिस्ट्री के अंदर हम देख लेते हैं सेंस में, जहाँ पे मेमोर्स की बात है और पॉलिटिशियंस और मिलिट्री स्टेटसमैन ने नोट किया. हाँ, आफ्टर सम सर्टेन टाइम दिस डायरी इज आल्सो presented to the public and it is open for public. कोई किसी की जाने के बाद कोई अहम वाक़यात उसके अंदर हों तो वो एक राइटअप में लिख के सामने लाए जा सकते हैं. तो जब ये सेकंड आदमी कोई दूसरा पर्सन लिख रहा होगा तो ये उसकी बायोग्राफी के कुछ मेजर आप कह लें पॉइंट्स होंगे, कुछ कुछ उसके बातें आप कह सकते हैं कि होंगी. I think so. Initial understanding about the biography and autobiography has been kept from these slides, and I would like to shift directly towards the methodology of biographical research. That is our actual topic of the day. Let me share with you what is the biographical research. Its introduction is spread over a number of slides. Biographical research is a qualitative research approach aligned to a social interpretive paradigm of research. If you recall in your mind, in the previous lectures, we have studied in detail about the qualitative research paradigms. And in the where we have discussed the research paradigms, I think so you will be aware about and you will remember that the three types of philosophies we have discussed: the constructivist approach, positivist approach, and post-positivist approach. So in the social sciences and social interpretive approach, it is known as the social interpretive paradigm of the research. That is basically the narrative approach of the research. The biographical research is concerned with the reconstruction of life, histories, and the constitution of meaning based on the biographical narratives and the documents. अब लोग तो अवेलेबल नहीं है, वो लोग जो जा चुके, जिसमें हम अभी बात कर रहे थे कि हम बायोग्राफिकल रिसर्च उनकी करते हैं, बायोग्राफीज लिखते हैं जो फेमस और वेल रेनाउंड लोग होते हैं. तो अब उन लोगों पे रिसर्च करना, आप लिटरेचर में ख़ास तौर पे, और जो लोग आपका जो फील्ड है, आप थीसिस भी करेंगे डिफरेंट राइटर्स पर, डिफरेंट पोइट्स पर, और डिफरेंट इवेंट्स पर, हीरोज़ पर. तो ये सब वो लोग हैं जो बेसिकली रियली रेनाउंड लोग हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी और लोगों को उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है. सो उनके वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखने के लिए रिसर्चर जब कॉन्टेक्ट करता है उनकी हिस्ट्री के साथ, तो डेफिनेटली वो उनकी बायोग्राफी की तरफ बढ़ रहा होता है. Now this is the point when it turns towards the biographical research, and the researcher serves researcher come historian, and the written history and the available documents, the biographical narratives को वो कंसल्ट करके अपना काम चलाते हैं. तो ये रिकंस्ट्रक्शनिज्म है, रिकंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच यूज कर रहा है रिसर्चर इस वक्त. दैट इज द पोस्ट क्वालिटेटिव research. And in the social sciences and specifically in literature, this is the social interpretive paradigm. So you are it's necessary for you to keep in mind the things where the keywords are being highlighted. So in this slide I will like to remind you the major keyword of the slide is social interpretive paradigm of research. Let's discuss the next. The material for analysis consists of interviews, protocols, memorandums, video recordings, photographs, and diversity of the sources. तो हमने नैरेटिव रिसर्च के अंदर भी पढ़ा था कि अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करते हैं. तो मटेरियल एनालिसिस और डॉक्यूमेंट एनालिसिस
at this stage looks like overlapping each other, like interview protocols and the memorandums and the video recordings, photographs. So these all things tells us about the different aspects of life of that the person that is under study and the research of the researchers. So the type of researchers working on these components is known as the biographical researchers. These documents are evaluated and interpreted according to the specific rules and criteria. Specific rules and criteria उन डॉक्यूमेंट से रिसर्चर जो है वो देखता है, उसको हाईलाइट करता है. The starting point for this approach is the understanding of an individual biography in terms of its social constitution, because this is the social reconstruction, and this paradigm follow the social constructivism, and the researcher is the reconstructionist. So he is taking out all these information about the individual biography of the people. The biographical approach was influenced by the symbolic interactionism, the phenomenological sociology of knowledge, and ethnomethodology. You know, we have learned about all these terminology that falls under the major umbrella of qualitative approach, the narrative approach, the narrative phenomenology, ethnography, case study. So all these phenomenology also. So all these components jointly works for biographical research. तो इस तरह यहाँ उन्होंने कहा कि ये तीनों चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं बायोग्राफिकल रिसर्च अप्रोच को, या बायोग्राफिकल रिसर्च जो है वो इन्फ्लुएंस होती है इन कंपोनेंट्स से. Therefore, biography is understood in terms of a social construct, and the reconstruction of biographies can give insight on social processes and figuration, thus helping to bring the gap between micro, meso, and macro levels of analysis. I think so. If you have studied with me the quantitative methodology, और उसमें हमने शायद कहीं ये पढ़ा था कि inferential statistics क्या होती है. In chapter of inferential statistics, I have been talking on the kurtosis, that was the lepto, meso, and platykurtosis. So in terms of that VN, that is basically the division of our data along a curve. So taking insight from that terminology, we can understand here the levels of analysis. That is the micro, very small, meso, आप कह सकते हैं इसको moderate, and macro, the mega level of analysis. And this analysis basically is the analysis of the documents, not the analysis of numbers, not the analysis of the figures. This is the analysis of photographs, documents, and write-ups, video recordings, and all available data about those celebrities and which are under consideration as a research subject for any of the researcher who is working on the biographical research of the time. We do have only 1 minute in this session. In next session, I will carry out. I think so. I have declared that the similar meeting ID code and the same password will work for all 4 sessions. So we'll see you in next session. I'm happy to see the number of participants that was highest 50 in this first session. I think so the relevant people, your GR and CR, Mujahid and Zulfi Shangul, will be taking attendance of each of the sessions separately and will be reporting me
the absent participants only. Thank you and Allah Hafiz. We'll see you in next session after 15 minutes. It's 6:10 now. We will rejoin at 6:25.